अस्सलाम वालेकुम। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 किया है। अच्छा, जब ऑयल गरम करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे तो हमने इसकी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखनी है, क्योंकि फिर वो अंदर से चिकन जो है वो थोड़ी सी जो है वो कुक नहीं होती, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी सारे मतलब हाफ़ चिकन जो है वो एक राउंड में कर ली थी और हाफ़ हमने सेकंड राउंड में कर ली थी। तो यहाँ पे हमने चिकन इसमें ऐड कर दी है। और जो लोग मेरी रेगुलर अपडेट्स रखना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट को ही फॉलो करें, उधर रेगुलर की अपडेट्स की जाती हैं। तो यहाँ देखें हमारी चिकन जो है वो कुक हो रही है, और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर देगा तो हम इसको काट लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है,
ब्लैक नहीं करना, हमने इसको गोल्डन गोल्डन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है ब्राउन, और ये बिल्कुल कुक हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको टिश्यू पेपर, प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उस पर निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो टिश्यू पेपर के ज़रिए ड्राई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी चिकन निकाल ली है और इसी तरह हम अपनी बाकी की चिकन भी इसी ऑयल के अंदर सेकंड राउंड में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया था ताकि जो मतलब ऑयल जो थोड़ा बहुत वो हो तो वो नॉर्मल उस पर टेम्परेचर पे आ जाए। तो हमने अगेन फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया था और इसमें हमने अपनी बाकी की चिकन भी ऐड कर दी थी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीट चिकन यहाँ पे कुक हो गई है, जो कि बहुत डिलीशियस लग रही थी देखने में। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की हमारी चिकन रेडी हो गई थी। तो अब हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन में जो है, कढ़ाई में जो है हमने, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो कढ़ाई तो होनी ज़रूरी है। तो कढ़ाई में हमने इधर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसको हमने हल्का सा गर्म करके इसमें हमने अपनी चॉप ऐड कर दिया है, ठीक है।
ज़्यादा अगर करी तो फिर वो जब थोड़ा ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और वो थोड़े रबर टाइप हो जाता है, वो फिर बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो थिकनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें तो फिर हम इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं और इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कि जैसे बाज़ारों की होती है रेस्टोरेंट स्टाइल, सेम वैसे ही इसका लुक है और इसका फ्लेवर भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताया करें नेक्स्ट रेसिपी कौन सी रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मंचूरियन बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको जो है ग्रीन अनियन के साथ जो है इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो है वो सेसमी सीड्स जो वाइट वाले आते हैं, सफ़ेद तिल जो है, उससे भी आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मंचूरियन बिल्कुल रेडी है, हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारी सर्विंग डिश बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको टेस्ट भी करेंगे, जो कि बहुत मज़े की। मैंने इसको जो है वेजिटेबल राइस के साथ इसको सर्व किया था। आप लोग चाहें तो एग फ्राइड राइस या वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।